Hello everyone, this is Kalyaan Kumar Jain, and if you want an introduction in 3 words, I always call myself as India's leading angel therapist. That's 4 words. The reason I'm giving the introduction once again today, because this is a very special workshop, a very special session. It can extend up to 1.5 hours also, and this is being recorded, and it is being recorded for the purpose that whoever wants to know more about the subject, about healing, about the 3 steps to financial healing this year, since this is the first year in the 9-year cycle, year number 1, and 1 month is already passed and it's just going to end. Okay. And today, when we are doing this live session, it is the 30th of January 2026. We have 11 months left to make this number 1 year as one of the years where we lay the foundation and create a strong base for our healing work, for our lives, for whatever it is, money, health, career, relationships, kids, business, home, investments, anything. Okay. And there are a lot of things which need our attention in these overwhelming times. So first we are going to start with what can be done. क्या कर सकते हैं? The first and the most important step is acknowledging and accepting what is going on in your life. आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है उसको acknowledge करना और accept करना. Are you making good money per month? Yes or no? If it's a no, you need to start working on it. If it's a yes, you also need to start working on it further to enhance it or to empower it or to make it more better. If you are satisfied with what you're getting right now, better. That's also fine. What is acknowledgement? Acknowledgement is realizing कि a certain situation is existing in your life. एक ऐसी परिस्थिति जो तुम्हारी जिंदगी में अभी है. फॉर एग्जाम्पल, जब भी नया साल शुरू होता है या महीना शुरू होता है, तो फॉर एग्जाम्पल यू विल से कि मुझे एंजाइटी होती है. अब अगर पिछले 8 या 9 सालों से इन द लास्ट 9 years आप में से किसी को भी बार बार एंजाइटी हो रही है, if any one of you is having anxiety every now and then, it means that anxiety has become your pattern. 3 days ago, a client called me. I have a lot of anxiety every now and then. 2 days ago, a client called me कि मुझे एंजाइटी है कि बार बार मेरे ऑफिस में most of the colleagues are bitching behind my back. They are backbiting, they are backstabbing, etc., etc. Cut, clear, delete, cut, clear, delete, cut, clear, delete. अब वो उनका वहम है कि रियल में ऐसा हो रहा है, वो तो उन्हीं को पता. But if this thing is going to continue for the next 3-4 months, घर वाले भी क्या बोलेंगे? तुम्हारा तो यार रोज का यार, तुम बंद करो. एवरी डे यू कम फ्रॉम ऑफिस और तुम बोलते हो कि तुम्हारे कोई पीछे लगा हुआ है और तुम्हारी क्रिटिसिज्म कर रहा है, जजमेंट कर रहा है. लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसी को पता कि हाउ दैट पर्सन इज फेसिंग दैट. फॉर एग्जाम्पल, 6-7 दिन पहले मेरे मुंह से निकल गया, माई वाइफ टोल्ड मी, वापस मुझे ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है. आई सेड रीता, हर नेम इज रीता. आई सेड पिछले 6 महीनों से तुमको ये 6 बार तो हो गया ना. आई एम ऑल्सो रियली फेड अप ऑफ हियरिंग इट. See, being a mentor, being a coach, being a healer, being a guide, or whatever you want to call X, Y, Z, an angel therapist, मेरे मुंह से भी निकल गया क्योंकि मैं 6 महीने से वही सुन रहा हूं. I also said, just stop it. Work on yourself. See what can be done. Only if we keep on repeating that thing again and again and again. Some person calls up. 1 महीने पहले वो बोलेगा सर आई एम स्टक इन लाइफ. 1 महीने के बाद में फोन करेगा आई एम स्टक इन लाइफ. 6 महीने के बाद में फोन करेगा आई एम स्टक इन लाइफ. Get over it. Otherwise, you're going to remain stuck in life forever. There are people who are not happy with their job. There are people who are not happy with their homes. There are people who are not happy with their health. And the continuous cribbing and the criticism goes on instead of taking that first step. और first step कभी-कभी लेना इतना आसान है. I can give you examples of 10 to 20 people in the last 5 weeks who went on. So we don't have money to buy groceries. We don't have money for this. We don't have money for that. जहर खाने के लिए पैसे नहीं है. I asked one thing. जहर खाने के लिए पैसा क्यों चाहिए? जहर खाना है तो ठीक है ना, फाइन.
उसके लिए भी पैसा क्यों चाहिए? just see the thinking, just see how lowest frequency can be achieved when you start uttering these words. I said okay, मैं आपको ये 3 सेशन भेज रहा हूं, वो दो सेशन भेज रहा हूं, ये 5 सेशन भेज रहा हूं, आप करो. 10 दिन के बाद मैंने जानबूझ के उनमें से 3 लोगों को फोन किया. Believe me, none of them had completed all the sessions, all 3 of them. And again, they started the same tape and the same pattern. People get used to it. They love and love to talk about their problems. I say, take the first step. पैसा नहीं है, ठीक है. फ्री में एक सेशन दे रहा हूं, वो भी नहीं लेना है. फ्री में रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं, वो भी नहीं करना है. अफर्मेशन दे रहा हूं, उसको करना 40 बार, दशा दिशा कर्म नहीं करना है. ऑरा क्लीन कर रो दिन में 3-4 बार, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, सर टाइम नहीं मिल रहा है. ऐसे लोगों के सामने अगर भगवान भी साक्षात आके खड़ा हो जाए, they will be unable to do anything because they are not willing to take the first step. And when I say take the first step, I'm not trying to sell anything here. Now, I'm trying to tell you, at least start clearing the aura, start doing the attunement, start doing the Akashic finger activation, Akashic activation, start doing the finger activation, start doing the Dasha Disha Karma. Every single day I get at least one feedback from all over the world. We are doing your aura clearing exercise. अभी थोड़े फीडबैक ज्यादा आ रहे, पहले कम आ रहे थे. We are doing your aura clearing exercise and I am feeling good about it. Thank you. That person is not my client. That person has not purchased any program from me. And I get that one. I also say angel blessings. बात खत्म हो जाती, it's over. So if people are unwilling to acknowledge and accept that they have a problem, then they are not even going to realize that there is a problem. Okay, number 1. Number 2, beginning to take the first step. What is the first step? For me, in our work, since we are right now in this session, our first step is very free. For any health issue, for any financial problem, for any marriage, divorce, separation, alimony, evil eye, black magic, negativity, investments, rented income, business, kids, pregnancy, IVF, adoption, travel, career, job, success, health, money. You name your problems in a line. One free solution is working on your consciousness, clearing your aura. And if you are having major problems, then do it 3 times a day, do it 4 times a day, do it 5 times a day. Because unless and until you're not going to activate the points, your cells are not going to respond. If your cells are not going to respond, your brain, mind, and body are going to go numb and they are not going to function in the proper way at all. Then you have to take the tablets, then you have to take the medicine. That is a different thing. So the first step is always clearing aura. First step is always recognizing, acknowledging, and accepting that I am willing to work on myself. I am willing to work on myself. I choose to work on myself. I am getting ready to work on myself. I am preparing to work on myself. And not saying, okay, sir, I will work on myself from tomorrow. And I challenge them, you're not going to work. Because your consciousness is not ready. That is why from your mouth the words come out, I will work. And the person never works. I want to work. The person never works. I want to be healthy. The person is never healthy. I will be rich. The person is never rich. I will purchase a new house in 2027. The person never purchases a new house in 2027. Because the beauty of the word will and want is that they are one step ahead of you. लास्ट टू लास्ट सेशन मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी दी थी गणपति के बारे में और वो अभी मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा. लेकिन when you say I will do it, when you come to that moment, that will is already one step ahead. So you say I will do it tomorrow and the will is already one step ahead. I'll do it tomorrow and the will is already one step ahead. The will is an energy field, or if you want a scientific or a geography term, it is a shadow which you can never catch. So acknowledging, acceptance, beginning to take the first step, consistently working on it. Every time I'm asked the question, aura kitni baar clean kare? I say 4 times. That is one cycle. We did one cycle, this was only one time. When you do it 4 times, it is one cycle. If you are going through a lot of problems, personal, financial, whatever kind of problems,
Do it 3 times a day, do it 4 times a day, do it 5 times a day, fine. Until and unless you feel better, you can keep on doing. And I have seen people tell me again and again कि मैंने 4 बार किया, I felt better. I'm feeling much better, because what happens, that exercise grounds you immediately. And grounding is very important in any healing work. What is the term? Grounding. Grounding means centering yourself to the core of Mother Earth. Grounding and centering yourself to the core of Mother Earth means being in the present and aligning all the 7 chakras, starting from the Mooladhara, okay, which is near your sexual reproductive system. Udar hi kidhar upar niche, and then what happens? From there, the energy goes to Mother Earth. That is why grounding. One of the ways of grounding, which is compulsory in all my classes, is sit on a chair and table. Make sure that your legs are on the ground. Don't cross your legs. Don't fold your hands. Avoid sitting on the sofa. Avoid sitting on the bed. If you're doing any of these things right now, आप इधर से सुन रहे हो, इधर से जा रहा है, कुछ भी भेजे में नहीं जाने वाला है, because there is no grounding. You will not understand a single thing. Any attunement that I do will not work for you. So the first rule is grounding yourself. 2 feet on the ground. चप्पल जूते कुछ भी पहने तो भी चलता है, but 2 feet on the ground. एक के ऊपर एक पैर कभी नहीं रखना है. When you are doing healing work, ऐसे normal बैठ सकते हो. Hands fold करके नहीं बैठना है while listening to all these things. Hands are to be always on the table or on the thighs, or if you're writing something, ऐसे हाथ हुए तो और भी better है, palm facing upwards, because always, okay, there is some or the other connection with the energy. That is grounding and consistently working and measuring the progress. How do you measure your progress? Keep a diary. Not at the phone. फोन पे तुम अपना प्रोग्रेस मेजर करने गए, इमीडिएटली कुछ ना कुछ पॉपअप आता है, यू गेट डिस्टर्ब, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, एंड द वेरी रीजन व्हाई यू हैड टेकन द फोन, that is lost. So the best part is your old thing. Keep a diary. Write down what is your progress. Progress in spirituality, progress in healing, progress in metaphysical field is made every 40 days. 40 days is a very significant point in all religion, be it Jainism, Buddhism, Islam, Hinduism, etc., etc., etc. Any process, any activity, any affirmation, any incantation, any implantation, any invocation, any treatment done for 40 days continuously without a break is definitely going to give you results. But since you and I are human, the 40-day cycle breaks because of our karmic debts, and then we have to start the cycle again. अगर यहाँ पर अगर अभी 100 लोग मौजूद हैं और 100 लोगों को मैं बोलूंगा कि 40 बार कुछ करना शुरू करो, 20 to 30 people will break their 40-day cycle within the 40 days. उनका पूरा नहीं होगा, because karmic energy carries a lot of testing times. When you're trying to complete the 40-day cycle, the universe, God, whatever you want to call it, energy, or your karma comes to the fore, because you're just going to dissolve it, and it does not want to move from your body organs. So it will tell you, जाने देना, आज थोड़ा 15 मिनट एक्स्ट्रा सो जा, कल कर लेना, बाद में कर लेना, 2 बजे कर लेना, लंच के बाद कर लेना, चाय के बाद कर लेना, बच्चे को स्कूल भेज के आ जाते, ट्यूशन से लेके आ जाते, ये कर लेते, वो कर लेते, रात के 11, 11:30 बज गए, 11:45 बजे याद आता है कि आज मैंने किया नहीं है, और वो हैबिट टूट जाता है, and the cycle is broken, and you have to start all over again. Now comes the excuses part. Sir, can the woman do in periods? I've been repeating 100 times now. All my work, all our work, what we are doing, Akashic, Angel, Karmic, can be done in your periods also. We are not doing anything religious. हम लोग पूजा पाठ, हवन, तंत्र, मंत्र, यंत्र नहीं कर रहे. तो आप मेरा वाला कोई भी काम या इधर जो भी काम सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, पीरियड्स में कर सकते हो. Then comes the other excuse. सर नेक्स्ट मंथ मेरे इसकी शादी है, मुझे बाहर जाना है, तो मेरा साइकिल टूट जाएगा. गो एंड टेक योर शीट और योर मोबाइल और योर पीडीएफ, डू इट इन द होटल. व्हेन यू आर सिटिंग इन द होटल, नहीं सर पूरा दिन फंक्शन होगा, ये होगा. क्यों? रात को सोने के लिए नहीं आओगे रूम में? सुबह नहाने के लिए नहीं जाओगे रूम में? People can give limitless excuses to not to complete their 40-day cycle, unless and until
जब तक आसपास कोई मौत हुई है या किसी डेड बॉडी को टच किया है तो बात अलग है, तो 1-2 दिन का ब्रेक लेना पड़ता है, 3 दिन का ब्रेक लेना पड़ता है, एंड देन यू स्टार्ट योर साइकिल अगेन। वो भी तुम्हारे लिए एक टेस्टिंग टाइम ही होता है कि यू वर जस्ट नियर टू कंप्लीटिंग योर 40 डेज साइकिल और तुम्हारे आसपास कोई गुजर गया। So measuring the progress and your consistency is done in 40 days cycles. Why 40 days cycles? One of the steps to measure your financial success and to get financially powerful and empowering is to see that anything what you practice is maintained for 40 days, because that energy is very powerful. It contains two powerful energies, the Amavasya and the Purnima. The Purnima means the full moon where you do the release work. Amavasya means the new moon where you do the manifestation work. Amavasya and Purnima are related to water. Water is related to your Swadhisthana chakra. Amavasya and Purnima are related to the tides. 70% water on earth. The earth is having 70% water, your body is having 70% water, and therefore your moods, your mind is getting affected by the high tide and the low tide. Purnima and Amavasya, इसलिए ज्यादातर एंजाइटी, सुसाइड, सर्जरीज अमावस्या पूर्णिमा के 3-4 दिन पहले 3-4 दिन बाद होते हैं, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता है. That is why all these things are important when you're practicing something. And then you take the next step and you learn more from people. When I say learn more from people, let's take a random example. One day, sit on YouTube or on Instagram, write down the names of these 8, 10, 15, 20, 30 people जिनकी वीडियोस बार बार आपके सामने आते हैं. उनके नाम लिखो, उनका क्या मोडालिटी है वो लिखो. 4-5 दिन उनका स्टडी करो. ये बंदा क्या सिखा रहा है? What is this lady saying? What is this gentleman saying? What is he teaching? Is it workable? Is it doable? Even if I don't take a course from this person, even if I don't invest any money in what this person is teaching, am I learning anything from this person? Test it out for yourself. If they are offering a free class, a free session, a demo, take that demo, understand what is going on, and then take an informed decision. There is no need to jump into anything just because it is on sale. There is 95% discount. This discount will never come again. This, that, ये वो, ये तो सब marketing चालू रहेगा. Do you really need it? Every third person who calls me, sir, मैंने लामा फेरा किया, मैंने रेकी किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया. They give me the names of 10, 12, 13, 15 modalities they have done. And then I say, अच्छा क्या क्या आपने कैसे किया? 2 दिन का वर्कशॉप किया, 1 दिन का ट्रेनिंग किया, 5 दिन का ट्रेनिंग किया, 7 दिन का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग किया, क्या किया आपने? मैंने 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया, मैंने 2 घंटे का वर्कशॉप किया, मैंने न्यूमरोलॉजी का 3 दिन 7 दिन का वर्कशॉप किया जिसमें हमको 1-1 घंटा पढ़ाया गया और वी आर बिकम अ न्यूमरोलॉजिस्ट. And then they are not getting any clients, they are not able to do anything. Why? Because half knowledge is dangerous. So go on Google, go on Instagram, go on YouTube, go on Facebook, whatever you want to learn. That is also one way of improving your financials. Because people call me, sir, I invested that, मुझे कुछ मजा नहीं आया और वहां पर अभी कोई फोन नहीं उठा रहा है. मुझे बोल के क्या फायदा? Then someone tells me, sir, मैंने वो 1.5 साल का वास्तु का कोर्स किया, लेकिन अभी वो उनके नोट्स मेरी समझ में नहीं आ रहे. मुझे बता के मतलब नहीं, उनको फोन करना है. सर वो लोग तो फोन उठाते नहीं है, उनके वहां पर कोई जवाब देता नहीं है. That is your concern. So before investing the money, you have to find out, is the person available? Is the person available directly? Obviously no. Does the person have a proper assistant who is going to pick up your phone? Because I am trying to call an astrologer for the last 8 bloody days. I am willing to pay 60,000 for his session and he is not replying, his team is not replying. People are absolutely clueless. And even all of these big names, small names, whatever, I'm willing to pay 60,000 rupees for this year's astrological guidance from this particular person, because angel card reading में मैंने 4 जन के नाम डाले तो इनका नाम आया तो मैंने बोला इस साल इनसे कराते हैं.
ना भाई साहब वो फोन उठा रहे 8 दिन से। मैं उनके कोई असिस्टेंट को मैंने मैसेज भेजा, ये भेजा, आई रिप्लाई टुमारो, विल रिप्लाई टुमारो, this assistant is gone for a wedding, this assistant is, I am not going to take names obviously. That's it. 4 months ago I was in Delhi. I wanted to just find out what is going on about some logo and some other thing XYZ. So I said chalo, I'll call up and I'll find out and I'll attend that one day workshop ki ye logo ka itna sab jo bhi chal raha hai kya hai. I called up all the 3 numbers given on that website where it was declared ki sign today for 50% discount, so many seats, 2,500, 3,500. I called up all 3 numbers. I sent a WhatsApp message. No one bothered to answer. Till date, I was not able to do that workshop. Maybe it was not meant for me. This is the note I left for that astrologer. Without taking names, just see this now. I'm not going to take name. Dash, this is my final request to you to call back or connect with me. I have asked the angels that if we are unable to connect this time, then maybe your guidance for me through astrology was not meant for me. I tried once, paid rupees 60,000 for an urgent appointment last year. It was an incomplete and unfulfilled appointment. I am willing to try again, of course, with payment again, not free. And if this is not resonating with you, then finally I will give up and the angels will guide me to a person who supports me for astrological guidance. Angel blessings for you and your family and your team. This is what I sent. There's a blue tick mark. अभी तक कोई हाँ या ना का जवाब नहीं दे रहा। और मुझे अगर कोई ऐसा मैसेज भेजता और बोलता कि मैं 60,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाल रहा हूं, आई वुड जंप एंड आई वुड कॉल दैट पर्सन 3 times, भाई आ जाओ, मैं तुमको हेल्प करता हूं. This is what is happening when we are not doing our homework, when we are just blindly going through so many things कि पूरा दिमाग एकदम फ्राई हो जाता है कि किसके पास जाओ और किसके पास नहीं जाओ. So taking the next step and learning more from people who are really doing some work, and that does not mean कि खाली मैं ही अच्छा काम कर रहा हूं या और ही कोई अच्छा काम करे. There are many people doing good work. I can name so many of them. They are really doing good work. So learn from them, take a class, take a demo, talk to them, communicate with them. जो भी है. Some people like only emails. Some people like only WhatsApp messages. Some people like a direct call. Some people like to book you on their Calendly, वो आधे आधे घंटे के slots आते Calendly पे वो. Some people like something else. जिसको जैसे जो जम रहा है. In my case, it is a direct WhatsApp message. You send me a voice message or you send me a note. Whenever I am free, I answer back and the chapter is closed. पूरे दिन के calls देख लिए. अभी before sleeping at night, I'll check all calls. किसका किसका आया, उसको जवाब दिया, ये किया, वो किया, clear किया, finish. The day's business is over. आज का खाना आज खाया, आज का खाना आज डाइजेस्ट होना चाहिए. तुम 4 दिन का खाना जमा करके फिर 5वें दिन खाने जाओगे, नहीं चलेगा. If I collect all the calls which I am receiving in one day, one day, और मैं बोलूंगा मैं अभी 5 दिन छुट्टी ले रहा हूं, मैं इन सबको संडे को जवाब दूंगा, it is not going to happen. Because you cannot talk to so many people at one time in one day. So you have to keep on communicating regularly, properly, consistently. Communication is also the key to earn money. A person is trying to take your appointment and you're not even bothered कि उसको reply कर दो, तो फिर क्या मतलब है? Now, what are the steps? One of the steps I told you is keeping your energy field clear. That is the 5 steps of aura which I've done again and again. तो भी किसी के पास नहीं है तो आप वेबसाइट पे जाना, you will get it. Talking about the website, कहां पर है वो? बहुत लोगों को क्यों नहीं मिलता है मुझे नहीं पता. When you click on the KKJ website, the first thing you get is join the community. You get these videos and you get this, join the free community. ये ग्रीन कलर का यहाँ पर है, उधर क्लिक करना है. देन यू गेट इज ऑरा क्लियरिंग एक्सरसाइजेस, और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री, एंड यू क्लिक ऑन दिस ग्रीन थिंग. आज भी मुझे एक जन मैसेज करते ही जा रहा था, सर आई एम नॉट गेटिंग इन. क्यों नहीं मिल रहा है? वाईफाई ऑन करो, चेक करो, मोबाइल को क्लियर करो. ये क्या, ये 5 एक्सरसाइज है, 1 2 3 4 5 हो गया. So that is your aura clearing. Then the second point is receiving support. What kind of support? Support can be many types. Support can be free. Now this is a free class which is going on. So it is a free support.
Support can be paid when you pay for something and you receive support. Support can also be complimentary. Support can be a gift. Support can be forwarded. तुमको एक लिंक मिला फ्री क्लास का, तुमने किसी और को फॉरवर्ड किया. ऑब्वियसली द पर्सन डूइंग द फ्री क्लास हैज टोल्ड यू जिनको फॉरवर्ड करना है कर देना. तुमको एक रिकॉर्डिंग मिली, तुमने किसी और को फॉरवर्ड किया, वो भी सपोर्ट हुआ. जब भी कभी कोई फ्री सपोर्ट मिल रहा है, गो विद द इंटेंशन कि आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एंड आई एम गोइंग टू सी इफ दिस इज एप्लीकेबल इन माय लाइफ. इफ दिस इज एप्लीकेबल इन माय लाइफ, मैं इसको यूज करूंगा. नहीं एप्लीकेबल है, राम राम धन्यवाद, आप अपने घर पे, मैं मेरे घर पे. एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट गोल, द नेक्स्ट पर्सन, the next situation, the next idea, the next opinion. Don't remain stuck in that. Then you can also join any such groups or communities where real healing is taking place, or where once in a while there are free and complimentary programs, or there is something at I don't know what, आजकल जो होता है 49 रुपीज 99 रुपीज जो कुछ भी होता है, अगर उसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रहा है तो वो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स ओके, इट इज देयर मार्केटिंग स्टाइल. जो भी वो लोग आपको 49, 99, 149 में सिखा रहे हैं, आप सीख लो उतना, जितना भेजे में जाता है उतना अप्लाई करो. बट द मेन क्वेश्चन इज, आर यू अप्लाइंग इट कंसिस्टेंटली व्हाट यू आर लर्निंग? इफ यू आर नॉट अप्लाइंग, एप्लीकेशन अगर तुम्हारी तरफ से नहीं है, देन इट मेक्स नो सेंस. नेक्स्ट इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सम लो कॉस्ट प्रोग्राम. यू वांट टू टेस्ट समथिंग, तो तुम लोगों ने 49 रुपीज 99 रुपीज का कुछ लिया, तो चलो अभी एक 1,500 का प्रोग्राम आया तो वो देख के करते, या एक 3,000 का प्रोग्राम आया तो वो देख के करते. एंड देन यू वर्क ऑन दैट. जस्ट डोंट टेक इट एंड कीप इट इन योर ड्रॉअर, कीप इट इन योर लैपटॉप, कीप इट इन योर मोबाइल, एंड देन आफ्टर 6 मंथ से मैंने तो उनका प्रोग्राम लिया था, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा. क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं. मेरा वाला एग्जाम्पल ले लो, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 108 दिन की अट्यूनमेंट है, एक अट्यूनमेंट 40 बार करना है, अभी तुम 40 बार नहीं करोगे तो तुमको फर्क कहां से पड़ेगा? तुम रोज 4 समोसे खाओगे और 10 कप चाय पियोगे और बिल्कुल नहीं चलोगे तो तुमको डायबिटीज होने ही वाला है ना. रोज तुम अगर 6 मिठाइयां खाओगे और तला हुआ पकवान और बाकी सब खाओगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू वॉक, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेन वेट. सम एफर्ट हैज टू बी पुट इन एवरीवेयर. What are those efforts? Practicing. For example, when I say 108 attunements of Ganesh, Lakshmi, Saraswati, it means you are doing it over a period of 108 days. 108 दिन तक जब आप एक एक चीज कर रहे हो तो उसका बहुत फर्क पड़ता है. 40 बार करना करना क्या होता है, वो तो मैंने कल भी करवाया था, अभी आज वो सब नहीं करवा रहा हूं. बट इट इज जस्ट 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 15, 5 टाइम्स 20, 5 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 30, 5 टाइम्स 35 एंड 5 टाइम्स अट्यूनमेंट. ये हो गया 40 बार. 6 से 7 मिनट लगती है. 6 से 7 मिनट तो लोग 14 और 15 मिनट दे सिट इन द टॉयलेट, दे सिट ऑन द पॉट विद द मोबाइल स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम इवन इन द टॉयलेट. तो why can't you go and do your GLS attunement in that 15 minutes? That is the question I ask people when they say that we don't have time. So taking the first step with a low cost program to heal yourself for an hour or more if necessary. Now people say, sir, I am having a lot of problems. Cut, clear, delete. If you're having a lot of problems, do it many times. Do it maybe twice a day. Do it maybe thrice a day. There are a lot of techniques which can be practiced again and again. Minimum time required is 15 minutes. I give minimum work 15 minutes. You can extend it to 1 hour also, 2 to 3 times a day, if you are going through a lot of challenges or if you're going through such a kind of situation. Let's drink some water. All right, then what are the other steps? Other steps are understanding where you are right now. And this is not to put down anyone. This is not to insult anyone. This is not to insult your own self or okay, take it in that manner. This is to understand कि अभी मेरी परिस्थिति क्या है. मैनिफेस्टेशन अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, रिलीज अपनी जगह है. लेकिन अगर 6 महीने से जॉब ही नहीं है और तुम बात कर रहे हो कि यू वांट टू बिकम द नेक्स्ट startup person or you want to own a house worth okay 4 crore,
then it means that you're not being very very clear about your goals and objectives. 6 महीने से तो जॉब नहीं है और तुम सोच रहे हो तुमको 4 करोड़ का घर लेना है, ये यहां पर तुम हो, 6 महीने से जॉब नहीं है और तुम सोच रहे हो 4 करोड़ का घर लेना है। मानो ईएमआई पे भी घर ले लिया 4 करोड़ का, तो भी उसका 3 या 4 लाख रुपया महीना ईएमआई होगा, एंड यू डोंट हैव अ जॉब ओनली। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स यू आर नॉट प्रैक्टिकल, एंड स्पिरिचुअलिटी इज वेरी प्रैक्टिकल. It starts from zero, or it starts from scratch. It starts from the place where you are, and then you build up on it. अगर मैंने 2 साल पहले पॉडकास्ट नहीं किया होता और मैं बोलता कि 2 करोड़ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं या 2 करोड़ लोग मेरा ऑरा क्लीनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट वुड हैव बीन अ ड्रीम. आई हैड टू टेक द फर्स्ट स्टेप, एंड द फर्स्ट स्टेप वाज डूइंग वन पॉडकास्ट. Then the second step was creating a Facebook account. Third step was creating an Instagram account. I was not on social media. I am just on social media for the last 2 years. October, November, December पकड़ा तो 2 years and 4 months. ये जो भी growth हुआ है अभी का, because of the social media or whatever podcast I have done, this is in the last 24 and 3, 27 months. लेकिन अगर 27 महीने पहले मैंने पहला स्टेप नहीं लिया होता तो I would have not come to this third or fourth step. So you also, whether you're dealing with money, whether you're dealing with health, whether you're dealing with career, whether you're dealing with relationship, you need to take the first step. In 2025, according to my diary, I got 5 calls in the whole year of women crying, my husband will kill me and he's beating me and he has पहुंच in the police और ये और वो, और मैं उसको छोड़ना चाहती, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ऐसा है वैसा है, ये है वो है. अभी तुम मुझे रात को 10 बजे फोन करो, सुबह 9 बजे फोन करो, रोते रोते फोन करो, कुछ भी फोन करो, यू आर 1000 kilometers away, 1500 kilometers away, and if your husband is beating you, the first thing what you do is you go and lodge a police complaint, you take legal help, you dial 103, you do whatever it is in your town, in your city, you can do. But that first step also they are unable to take, or they don't want to take. नहीं वो है ना, जब गुस्सा होते हैं ना तभी मुझे मारते हैं, नहीं तो बहुत अच्छे हैं. महीने में 15 दिन तुम मार खा रही हो और अभी तुम बोल रही कि वो बहुत अच्छे हैं, मुझे फोन करके क्या मतलब? देन आई टॉक लाइक दैट. आपने मुझे फोन क्यों किया? नहीं मुझे पूछना है, ये है वो है. पूछना है बात बराबर है, सेशन लेना है बात बराबर है, लेकिन पहली बात तो ये है कि 15 days यू आर बीइंग बीटन ब्लैक एंड ब्लू, यू आर सेंडिंग मी फोटोग्राफ्स, आंख सूज गई है, हाथ ये हो गया है, वो हो गया है. Go and lodge a complaint in the police. Call your parents, call your brother. तो जैसे नहीं मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा भाई इधर है, ये है वो है. Run to the nearest police station and do something, na? Call your neighbors, scream, shout, do whatever needs to be done. That is the first step. If you don't take that first step, no one can do anything. No one. Even God also and even angels can't do anything, because free will and choice play an important role in spirituality, in metaphysics, in healing. You may send all the healing to a person and the person is unwilling to take your healing. You are wasting your time, energy and money. That is why I asked the person, I'm going to do healing for you. Are you willing? Are you willing to receive it? Are you willing to do it? Do you want healing? Do I ask a question on your behalf? अगर मैंने क्वेश्चन पूछा, GOT गॉट, गाइडेंस ऑप्शन टाइमलाइन आया, तुम प्रैक्टिस करोगे? मदर्स कॉल मी, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे का जॉब नहीं लग रहा है, लेकिन वो तो ये चीजों में मानते नहीं है, आप अगर कुछ बोलोगे तो वो करेंगे नहीं, तो क्या आप करने वाले हो? चलो माना आपने किया, बट देन यू विल डू फॉर 20 days एंड देन अगेन यू विल से वो तो सुनता ही नहीं है, जाने तो मैं भी नहीं कर रहा हूं. ये आपने अपनी 40 दिन की साइकिल तोड़ दी. कम से कम आप भी कर रहे होते अगर 2-4 बार 40-40 दिन की साइकिल, तो उसका 20-30% तो उसको असर मिलेगा, बेटे को या बेटी को, और उनका काम तो होगा. बट इट कैन नॉट बी फोर्स्ड. What else can you do? You can keep your energy field clear. You can receive a lot of support, whether it is free or complimentary or paid. You can take a first step. You can go in for a low-cost program. You can measure your success. You can work on it consistently. Now, what are the other ways? Then I told you, go on social media and find out the subject that you want to learn and that you are studying and that you are interested in. That also helps you financially, because
you can get one or the other idea here and there and you can start. I'm very surprised. Every 10th or 11th person who calls me says, I'm a tarot reader, I'm a Reiki, this one, I'm that one. And then say, I ask them one question after listening to all their story for 5 minutes. महीने का कितना कमा रहे हो? कितने क्लाइंट है? बस उधर ही बात खत्म हो जाती है. One lady from Gujarat, or I don't know where it was, she says, I'm hardly making 3,000 in a month. And I said, you're doing tarot, lama fera, reiki, prani cleaning, and you're earning 3,000 a month. 100 रुपया दिन का? What is wrong with you? कहां से सीखा? क्या सीखा? They have no answer. Either they are in a false dream, most of the men and women who are into healing, or they don't know ki where are they going and what are they doing, and what is the need to do 10 modalities. When you're doing 10 modalities, when you're not a master of one, your clients are going to be scattered. I get a call, sir, ये काम है. एक मिनट, आपने जो सवाल किया वो मेरे काम में नहीं आता है, वो वास्तु में आता है. प्लीज गो एंड आस्क अ वास्तु पर्सन. सर आपके पास कोई वास्तु वाला है? नहीं, आई डोंट नो, यू प्लीज फाइंड आउट. Finish. Call cut. No time wasted. No भेजा मारी. No nothing. Then someone calls me, sir, ना वो मैं जस्ट अभी ओके कामाख्या जाके आया, मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ये है वो है. पूरी 5-10 मिनट उनकी स्टोरी सुनने के बाद, इफ आई फील आई कैन डू एनीथिंग ओवर योर फाइन, नहीं आपके केस में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी, आप किसी और को देख लीजिए. Immediately within the first 5 to 10 minutes, you need to realize whether you're going to be able to help the client or no. Otherwise, it's a waste of time, waste of energy, and waste of money from both the sides. And why keep a client hanging? या तो उनको हाँ बोलो या ना बोलो, ताकि वो अपने रास्ते चले और तुम अपने रास्ते चलो. So it's very important to have awareness and clarity and purpose in your work, in your business. To get to a financial situation which you want, have awareness, clarity, and purpose. ACP. A is for awareness, C is for clarity, P is for purpose. Become aware. Am I doing the right work with this person? Yes, no. Then have a lot of clarity. Is this person going to be able to do? अभी जैसे 3-4-5 लोगों के फोन आते, सर हिंदी में करना है. I tell them point blank, 80% इंग्लिश में है, 20% हिंदी में है. अभी हमने कोशिश की कि we are going to convert all the PDF into हिंदी and we'll give you all the 200 pages of PDF in हिंदी. लेकिन बाकी का पूरा ट्रेनिंग हिंदी में नहीं होगा. आपको YouTube पे जाना है, डबिंग का बटन दबाना है और वहां पर हिंदी का ऑप्शन चूज करना है, और मैं जो बोल रहा हूं वो हिंदी के डब आवाज में सुनाई देगा. उतना तो आप ही को करना है, मैं तो नहीं कर सकता हूं. यू वांट टू लिसन इन तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, यू कैन लिसन इन योर लैंग्वेज. आई एम डन. मेरे पास से तो वो काम हो गया. So when you are clear, the person is also clear कि मुझे इनके पास काम करना है कि नहीं करना है, and that saves a lot of money for all of you. Now what are we going to do? We are going to understand. एक मिनट पहले तो एक attunement करना है, that we are going to do after 10 minutes. I'll just complete this. So all these days I was talking about low cost program. There are a lot of people who are going through challenges and opportunities. Cut, clear, delete. So what is a low cost program? A low cost program is a program where you have to just invest a basic minimum amount and you have to start your journey. Many people do not want to start a journey. So for them, the low cost program is there. What is the low cost program? The first and the most important. Why am I teaching you this? Most of you are trainees. Most of you are taking the training from me. Most of you are taking the group session from me. You will know how to talk to your clients and how to offer what. If they are at this level, you will offer this. If they are at this level, you will offer this. If they are at this level, you will offer this. कॉफी गाड़ी पे भी पी सकते हो, 10 रुपए का. रेलवे में 10 रुपए का कॉफी मिलेगा. कॉफी शॉप में 200 रुपए का कॉफी मिलेगा. 5 स्टार होटल में 500 रुपए का कॉफी मिलेगा. There is a layer and you have to follow that layer and you have to follow that protocol. So there's nothing wrong in it. Today, all these years, it was like sleeper class. Then it moved to 3-tier AC. Then it moved to 2-tier AC. Then it moved to plane. Then it moved to premium economy. Now it is at business class. Now I'm aiming for first class. Most of my flights are business class nowadays. But to get there, there was a journey. I did not jump from one point to another. It's not possible for anyone unless and until you win a lottery. That's a different thing. So first we'll start with GLS attunement. Quickly, I'm going to explain in 2 to 3 minutes each and every program so that most of you who are doing it also get a better understanding of it.
And most of you who want to do these programs for others at a later stage after you become trainers, you also know how to talk to people. What is GLS attunement? GLS attunement means Ganesh, Lakshmi, and Saraswati attunement. You get one attunement. I'm sorry, not get. You get all the 100 attunements, the PDF. You watch the recording. Okay. You practice one attunement 40 times. एक अट्यूनमेंट सिर्फ 40 बार करना है एक दिन में. दूसरे दिन दूसरा अट्यूनमेंट, तीसरे दिन तीसरा अट्यूनमेंट, चौथे दिन चौथा अट्यूनमेंट. यू कैन डू एनीथिंग रैंडमली, यू कैन गो इन अ लाइन, लेकिन 40 बार उसको पूरा करना है. अभी इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो वो पीडीएफ को हिंदी में कन्वर्ट करो, नहीं तो हिंदी में लिख के ले लो, मराठी में लिख के ले लो. आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट वन क्लाइंट ऑफ माइन हु इज इन दुबई, हु इज अ महाराष्ट्रियन. She's converted everything into Marathi and she's teaching in Marathi and she's getting wonderful clients. And she made her first 75,000 by selling only one course of angel card reading, which she converted into Marathi. She sold it to 10 people at 7,500 each and she got 10 clients and she got 75,000 in 1 month. Now she's converting the second course. Then she'll convert the third course. There are 50 courses in angel therapy training. By the time she converts all the 50 courses into saleable, proper one course or one workshop, it will take her 50 months. 50 महीने का तो उसका काम हो गया. She's going to recover 20 times more than 50 times more than what she's invested. But the brain is hers. And the courage is hers. Bravery is hers. मैंने तो खाली provide किया है. I just gave the recipe. Nowadays people call me, I don't know why, इतना clearly मैंने explain किया है. Group session क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है. आई गिव अ वेरी ब्यूटीफुल किचन एग्जाम्पल. आप होटल में गए, पाव भाजी मंगाई, 120, 130, 180 रुपए पाव भाजी के दिए, आपने पाव भाजी खाई और आप घर पे आए. दैट इज अ ग्रुप सेशन. अभी आप अपने घर पे हो, आपने पाव लाए बेकरी से, पूरा सामान लाया, पाव भाजी अपने घर पे बनाई, उसमें मीट मसाला तड़का बटर चीज वगैरह डाला और वो पूरा उसका रेसिपी तैयार करके पाव भाजी अपने परिवार वालों को खिला रहे हो और आप खुद खा रहे हो. दैट इज ट्रेनिंग. बेसिक कॉमन सेंस है. ट्रेनिंग में आपको रेसिपी मिलती है, आप खुद बनाते हो, पहले खुद भी चखते हो और फिर दूसरों को भी चखाते हो. इट मींस यू बिकम अ ट्रेनर. ग्रुप सेशन में यू आर जस्ट ईटिंग वट एवर इज गिवन टू यू, यू आर कंज्यूमिंग इट एंड यू आर इंप्रूविंग योर लाइफ. दैट्स इट. So there is a difference between group healing sessions and there's a difference between training. Okay. So coming back to GLS attunement is one program. What is the low cost program? A low cost program starts with 3,000. That's it. Tomorrow when you become a trainer after 6 months, 4 months, introduce some low cost programs. 2, 2, 2.5, 3, 3, 4, 4 हजार में एक अगर तुमने प्रोग्राम अनाउंस किया, and even if you are able to sell it to 10 people, you get your first 30,000 as income. And it is simple. You have to sit in front of a laptop. You have to have a Zoom connection. You have to have a Wi-Fi. You have to take a Zoom class, maybe a free class, maybe a paid class, and you start your journey one by one. Then we go to the next low-cost program, which is 2024 group healing sessions. In the year 2024, we had 50 group healing sessions. Uske recordings available hai. Many people say that we cannot invest 30,000 rupees right now. So you take the recordings of the 2024 sessions at only 3,000. Go through all the 50 recordings. In 50 days or in 100 days, you have the recording for 1 year and you start improving your life. You have taken that one step. जब वो 50 recording पूरे करोगे, जिसमें आकाशिक healing, karmic healing, even if I take names also, you'll understand इतना सारा healing उसमें मिल रहा है. Obviously, once you purchase the recording, you have to watch it on your own. We are not discussing that every day. Then you have the recordings of group sessions 2025. 2024 के 50 सेशन हो गए तो 2025 के 50 सेशन कर लो. अगर एक साल में तुमने ये भी 100 सेशन कर लिए 3 and 3 6,000 में, तो भी तुम्हारा कितना काम हो जाता है. At least your consciousness rises at least by 10%, 20%. The main aim, the main focus, the main motto, goal, objective is to pull you from your scarcity mindset. अब तुम बोलोगे सर मेरे पास 3,000 रुपया भी नहीं है, 100 रुपए दिन के भी मैं अपने ऊपर नहीं खर्चा कर सकता हूं. And then after 2 months, you are spending 2 lakh rupees on a wedding or on a birthday party. Then I don't know what to say to you. This is the problem in India. Women or men don't spend on themselves. That is one issue. Second issue I'm going to tell you. If you feel bad about it, great. Many women call me.
ठीक है, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ, मैं मम्मी को पूछ के बताती हूँ, मैं मेरी सास को पूछ के बताती हूँ। 3,000 रुपया अपने ऊपर खर्चा करने के लिए 15 साल की शादी के बाद अगर आपको सास को पूछना है और हस्बैंड को पूछना है, वेयर इज योर एग्जिस्टेंस? And that is why my main one affirmation is whoever I'm teaching is becoming financially independent. All the men and women who come into contact with me are becoming financially independent in whatever they have to become because they need to start working on themselves. So I ask those women only one thing. इस पूरे हफ्ते में आपके हस्बैंड को एक बार फोन करके बताना या उनको पूछना कि अगर वो किधर दोस्तों के साथ जा रहे किधर बार में, वहां पर 2 ढाई 3 हजार रुपया उनका बियर बार में बिल हो जाता है, 6,000 बिल होता है, 7,000 बिल होता है, तब वो आपको पूछते क्या मैं आज पीने बैठ रहा हूँ तो मैं लेट आने वाला हूँ? नहीं. एंड इफ यू वांट टू स्पेंड 3,000 रुपीज ऑन योर ओन, यू हैव टू वेट टिल ही कम्स, देन आस्क हिम, देन ही इज गोइंग टू डू जीपे. ओ माय गॉड, आफ्टर 15 years of marriage, after 27 years of marriage, if that is the case, where is the empowerment? Where is the emancipation we are talking about, whether it is for men or whether it is for women? Then there is a common excuse. Husband will say, ये मेरी वाइफ ये सब चीजों में बिलीव नहीं करती है, अगर मैं करूंगा तो फिर हमारे घर में घमासान हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा. Sometimes the wife is telling me, ये तो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते, तो अगर मैं करूंगी तो फिर इनको पता चल गया तो मुझे डांटेंगे. A man or a woman, anything, if whatever they want to do, if there is no communication, no coordination between both of them, what is your marriage all about? A man, when he wants to sit for 6 hours of cricket watching, he will take a holiday, he will tell the office I'm sick, and he will sit and watch the cricket match at home with his friends or outside. And if the woman has to do the same thing, she has to wait and wait and wait and ask for permission. Or if the man has to do the same thing, he has to wait and ask for permission. So understand, where do you stand? This is not an insult. This is not to make you angry or anything. This is to understand, where are you in the scheme of things? Where is your existence? What are you doing? What kind of a life are you living? It is 2025, 2026. Are you living in the 60s or 70s or 80s that to do something, to attend a class? Oh my God, there are people who say मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ, मैं एकदम छुप छुप के अटेंड कर रही हूँ, कॉफी शॉप में जाके अटेंड कर रही हूँ, गार्डन में जाके अटेंड कर रही हूँ, दोस्त के घर पे जाके अटेंड कर रही हूँ, घर पे पता चल गया तो. अरे तुम हीलिंग की क्लास अटेंड कर रहे हो, बोल दो ना. और अगर नहीं सुनने को तैयार है तो टॉक एंड कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट. If the relationship is based on that kind of mistrust, how are you going to move forward in life? And that is one of the reasons for financial failure. Because the woman has invested in share market, उसने कोई शेयर मार्केट का कोर्स कर लिया. ये वाला अभी रिसेंट का लाइव एग्जांपल है. व्हाट्सएप का कोई ग्रुप आया था, उसमें बोला था 2 के 4 रुपए हो जाएंगे. व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिए, और वो व्हाट्सएप ग्रुप भी गायब, लोग भी गायब, कोई फोन भी नहीं उठा रहा है. अब वो औरत डर रही कि मेरे हस्बैंड को पता चला तो क्या होगा. ये तो तुम्हारी गलती हुई ना. पूछ लेना था हस्बैंड को, देखिए ये वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप आया, लिंक आया है, ये लोग बोल रहे कि ये लोग ये शेयर मार्केट वगैरह सिखाते हैं और मुझे ट्रेडिंग से. अरे भैया, ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है, एंजल थेरेपी सबके लिए नहीं है, पायलट बनना सबके लिए नहीं है, शेफ बनना सबके लिए नहीं है. जस्ट बिकॉज व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा है, डज नॉट मीन दैट यू हैव टू डू एवरीथिंग. जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू माई ब्लैबरिंग फॉर द लास्ट 1 hour does not mean that you have to sign up for an angel therapy course if it is not meant for you. The point I'm trying to make is study, research, use your brains, use your mind, use your heart, use your body. Otherwise, it is not helping you. 5 of my clients, more than 5 or 6 of my clients have lost more than 2 to 10 lakh rupees in this share market and trading scam on WhatsApp. पता नहीं, कोई फिजिकल ऑफिस नहीं, कैसे ये लोग 2 लाख रुपए का शेयर, पहले वो 25,000 के शेयर देते हैं, फिर उसके 50 हो जाते हैं, फिर वो 50 आपके अकाउंट में डालते हैं, फिर आप वो 50,000 के शेयर लेते हो, फिर वो लाख रुपए आपके अकाउंट में डालते, चलते चलते 4-5 बार गिव एंड टेक हो रहा है. जब 3-4 लाख का साइजेबल इनकम हुआ, फिर पता नहीं वो व्हाट्सएप ग्रुप ही गायब हो जाता है. देयर इज नो फिजिकल ऑफिस, देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नथिंग, because the research is not there. In the same way, if you're paying for a course, 49 rupees, 99 rupees, 2,000 rupees, 20,000 rupees, 2 lakh rupees, find out कि 2 लाख रुपया भरने के बाद में वो इंसान मिलने वाला है कि नहीं. नहीं तो फिर आप फोन करोगे और वो सेक्रेटरी फोन उठाएगी, सर बाहर गए, सर बाहर गाँव गए,
आज तो ये क्लास है, आज ऐसा है, आज वैसा है, ये है, अभी आप रिकॉर्डिंग देख लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, एंड देन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन द कोर्स. यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, यू डोंट नो वेयर टू एंड, यू डोंट नो व्हाट टू लर्न, और कुछ भी शुरुआत नहीं हो रही. दैट इज वाई स्टार्ट. इफ मोस्ट ऑफ यू आर फीलिंग लाइक दैट, इफ यू हैव हैड एन एक्सपीरियंस लाइक दैट, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, no need to trust me also. Start with a low cost program, work on yourself, improve your consciousness, and then go in for the other program. As simple as that. The last part, what we have over here, then we'll do the attunement, is the distant healing, which I've just started now, because in the last 10 weeks, I maybe attracted around 15, 16 participants or calls. Sir, we don't have money at all. We have only 2 or 3,000 rupees. Agar kuch usme hota hai to bata. So then I started the distant healing program for this kind of group who is really vibrating at a very low frequency. So I said, 3,000 rupees I'll charge. Every day I'll send you distant healing. I need your photograph. I need your name. I need your date of birth, and I need the issue for which you require the healing. 30 days of healing will be given to you so that you are open to that healing, and you continue doing the aura and all the other exercises. आप यहां से कर रहे हो, मैं यहां से भेज रहा हूं, थोड़ा तो कुछ क्रैक हो, थोड़ा तो कुछ इंसान आगे बढ़े. तो वो भी है डिस्टेंट हीलिंग इन अ ग्रुप, नॉट इंडिविजुअल, इन अ ग्रुप. ये सारी चीजें हो गई. नाउ मेनी पीपल आस्क मी, सर आपसे सेशन लेके, आपसे ग्रुप सेशन लेके हमें क्या फायदा हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है? You're increasing your money consciousness. What is money consciousness? Income, loan, investment, passive income, active income, profits, health, mental health, physical health, sexual health, spiritual health, financial health, personal health, professional health. All these are health. Career, job, success, relationships, long distance relationships, nearby relationships, traveling, kids, pregnancy, IVF, adoption. A client called me 6-7 days ago. She messaged me, सर गाइडेंस लिया था आपसे सेकंड आईवीएफ के लिए, सेकंड आईवीएफ हो गया और परसों ही हार्ट बीट सुनाई दी, दी आईवीएफ इज अ सक्सेस, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन. पहला आईवीएफ फेल गया था, सेकंड आईवीएफ, आई सेड डोंट से एनीवन, मुझे बता दिया ठीक है, बिकॉज हम अपने बीच में अपॉइंटमेंट हुआ, अभी और किसी को नहीं बताना है. हार्ट बीट अभी अभी आई है, पहले वो सब होने दो, 2-3 महीना जाने दो, उसके बाद में बताना. सोशल मीडिया पे अजीब बात नहीं डालना, बिल्कुल नहीं डालना ये सब, बिकॉज एक आईवीएफ जब फेल जाता है, द फाइनेंशियल लॉस, द मेंटल टॉर्चर, द ट्रॉमा, सास की बड़बड़, ससुर की बड़बड़, हस्बैंड का प्रॉब्लम, खुद के माँ बाप का प्रॉब्लम, कितना एक वुमेन को झेलना पड़ता है, ओनली शी नोज. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स टू योरसेल्फ. डोंट शेयर एवरीथिंग एट ऑल. सो किड्स, pregnancy, IVF, adoption, etc., angel therapy, karmic therapy, akashic therapy is useful for all these things. If the angels are saying no, stop it. If the angels are saying yes, do it. If the angels are saying after a few weeks, wait and do some healing and ask the question after a few weeks. If the angels are saying after a year, wait for a year and then go for it. Guidance मिल रहा है, prediction नहीं दे रहे. Business के बारे में, self-employment, employment, so many things are there. People rush into businesses, they invest in things they have no idea about, and then they call up after the loss. There is a client in Canada, there's a client in Hyderabad or somewhere, जिन लोगों को होटल का एबीसी नहीं पता था और उन्होंने होटल में, रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया, आज 2 साल से उनके पैसे अटके हुए, ना तो होटल चल रही है, ना होटल वो बिक रही है, ना कुछ वो बंद हो रही है. Home, own, rent, and property. A lot of people have to purchase property at a later stage. A lot of people are given property by birth. A lot of people purchase property because of EMIs and all. You need to understand what is your property grid. एंजल थेरेपी में ग्रिड होते हैं ना, ट्रायंगल के, हर एक अपना अपना ग्रिड देख कि मेरे लिए रेंटल इनकम है क्या, मेरे लिए ओन प्रॉपर्टी अभी है क्या, डू आई लिव इन अ रेंटेड हाउस, डू आई लिव इन अ ओन हाउस, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है. आस्क एंड रिसीव गाइडेंस. इन्वेस्टमेंट्स, बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनीथिंग, वेदर इट इज प्रॉपर्टी, वेदर इट इज शेयर मार्केट, वेदर इट इज क्रिप्टो करेंसी, इज वन बिग issue with most of the people. They don't understand the ABC of crypto, and they take crypto and then the money remains there, and then only, I don't understand, so I don't know about it. But there are many people who have that kind of thing going on. Then there is one issue, cut, clear, delete.
evil eye, black magic, negativity, blah, blah, blah. Yes, as an angel therapist, karmic therapist, and akashic therapist, I agree, 100% agree, these things do exist. But if a certain thing exists, the opposite, the polar opposite, the polarity of it is also existing. And when you're working with angels, these things have to dissolve. That is why angels and mediumship साथ में नहीं जाता. There are many people who are doing mediumship and everything together, and then it becomes a very confusing thing. What is mediumship? Mediumship is when you're dealing with dead people, people who have passed on. शमीक दवर की दादी या कोई बुआ या कोई थी, अच्छा नाम था उसका, शी इज रिटन अ बुक ऑल्सो, द लॉज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. वो मीडियमशिप करती थी. देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग मीडियमशिप, बट व्हेन दे आर डूइंग मीडियमशिप, दे आर कनेक्टेड टू लॉन्ग लॉस्ट souls, to dead people. And there are many clients who call me, I lost my husband, I lost my father, I lost my wife, I want to communicate with them, मुझे ये जानना है, वो जानना है. I listen to everything and I say, ठीक है, आपके केस में आपको जानना जरूरी है, आप कोई मीडियम के पास जाओ, मेरे पास एंजल थेरेपी करा के मतलब नहीं. एंड टू सम ऐसे कि ये सब चीजों में आपको जाके मतलब नहीं, द जर्नी इज कंप्लीट, इट्स ओवर, आप अभी अपने ऊपर ध्यान दो. बिकॉज व्हेन यू गो इनटू द व्हाई ऑफ एनीथिंग, you are going to go into deep shit. You will never get a few answers. Life is like that कि हमेशा black and white नहीं होता है. हमेशा लाइफ में yes या no में आंसर नहीं आता है. It's not black, it's not white. Sometimes things happen, we have no answers. We have no explanations. Many times in angel therapy, akashic therapy, karmic therapy, a person will ask a question and I say point blank, I cannot take this question. This question does not arise over here. You will have to ask someone else. In the last 3 years, I refunded the entire session amount only to 2 people because they were expecting something else from Akashic. They were expecting to go into 5 lifetimes. Many people call only for Akashic. I say I'm not doing only Akashic. I am doing angel therapy, Akashic therapy, karmic therapy into one. When you're clear, you make money. When you're not clear, you do not make money. One of the principles for becoming financially independent is become clear what you want to do. Do you want to become a healer? Become a healer. You want to go into spirituality? Go into spirituality. You don't want to go into spirituality? Just forget it. Do your other business. Other business के लिए तुमको 1-2 साल में एक आध बार guidance लगा, ले लो, हो गया. There are many people who have a very good corporate job. Many people are running a business. Many people are running a store. Many people are doing some other things. जरूरी नहीं that each and everyone has to become a numerologist and an astrologer. आजकल जो 2020 के बाद में जो फैशन हुआ है that every building in Mumbai has a numerologist, every building in Mumbai has an astrologer. और मतलब नहीं है. एस्ट्रोलॉजी इज सो डीप. 20-20, 30-30 साल की पढ़ाई के बाद भी वो एस्ट्रोलॉजर्स इतना पढ़ते रहते हैं, और तुमने 4 दिन में कहां पर कोई कोर्स कर लिया और तुम बोलते हो आई एम एन एस्ट्रोलॉजर. इट इज नॉट पॉसिबल. Angel therapy takes 1 year, and there are people who are saying, I'm an angel therapist, I have done angel card reading course. Angel card reading is not angel therapy. Tarot card reading is not angel therapy. Oracle card reading is not angel therapy. People fail to understand that. So become clear. When you're clear, you will know whether you want to do evil eye, you want to do black magic, you want to do... There's some new fashion and new fad called as white magic. I don't know what it is. मैंने किधर सुना था. I did not even bother to find out what it is. Or you can just do अमावस्या healing, पूर्णिमा healing for yourself. Simple. कुछ नहीं करना है. हर अमावस को बैठो, मैनिफेस्टेशन का काम करो. हर पूर्णिमा को बैठो, रिलीज का काम करो. कुछ नहीं करना है. कोई तामझाम नहीं करना है. तू just do release manifestation every 15 days. हर अमावस्या अलग होती है, हर पूर्णिमा अलग होती है. उससे भी तुम्हारा फाइनेंसेस इंप्रूव होता है, बिकॉज यू आर क्लियर कि मैं पूर्णिमा के टाइम पे रिलीज करूंगा और अमावस्या के टाइम पे मैनिफेस्ट करूंगा. इतनी क्लैरिटी भी आ गई तो भी 10% तुम्हारे फाइनेंसेस इंप्रूव हो जाए. नाउ व्हाट डू यू रिलीज ऑन पूर्णिमा? एवरीथिंग दैट यू डोंट वांट. व्हाट डू यू मैनिफेस्ट on Amavasya? Everything that you desire. That does not mean taking a photograph and sitting, I have a car, I have a car, I have a car. मैं वो वाला manifestation नहीं बोल रहा. वो अलग चीजें हैं. When I say manifestation, it means sitting in your room and working on your body, working on your organs, working on your dasha, disha, karma, working on your mind, body, brain, whatever. जो अभी मैं कराने वाला हूँ attunement, 10 बार कराऊंगा. कौन से 10 स्टेप है, कैसे वो स्टेटमेंट पढ़ना है, कैसे बोलना है. Because body has to accept it.
बॉडी एक्सेप्ट कर रही है तो ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है तो हार्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. मेनी टाइम्स दीज थिंग्स हैपन. पूर्णिमा अमावस्या. Then comes one major part in everyone's life: marriage, divorce, separation, alimony. All these things can be solved by Akashic Angel Karmic therapy. And see, just don't go on saying every time, सर मेरे कर्म ऐसे हैं, मैंने क्या कर्म किए मुझे पता नहीं, ये वो. Why are you manifesting it by saying again and again? Cut, clear, delete. Why are you manifesting it again and again? Keep on saying that I am releasing whatever needs to be released, and I'm attracting whatever needs to be attracted. Don't keep on talking about your negative life, what is not working in your life to every Tom, Dick, and Harry. People will run away from you. A lot of people have no friends. A lot of people working in the office and colleagues and all run away from you because maybe look at your speech. Louise had a beautiful technique. She would say, पूरे दिन आपके मुंह से जो भी आप बात कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करो एक बार, एंड देन लिसन टू इट एट नाइट. यू विल फाइंड कि आपने पूरे साल में पूरे दिन में इतने नेगेटिव स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, इतना क्रिटिसाइज किया है, इतना जज किया है कि यू विल बी सरप्राइज्ड कि अगर इस ये एनर्जी को मैं फाइनेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो मेरा कितना लॉस हो रहा है. इट कैन बी अ लॉस ऑफ 10,000 पर डे, 15,000 per day also, right? So that is one thing. Now, how can we move from low to high frequency? Low frequency can be clearing your aura one time a day. High frequency can be clearing your aura 3 to 4 times a day. Low frequency can be doing all these 5 processes one time and then forgetting. High frequency can be doing one or the other group healing session or a technique or a process which you have learned wherever, practicing it on a daily basis. Low frequency is working on yourself for 5-10 minutes, 15 minutes. High frequency is working on yourself for minimum half an hour to 1 hour. Over here, there are some people who say, sir, मैं 3-4 घंटा काम कर रहा हूँ. 3-4 hours I meditate, I do Kriya Yoga, I do Reiki, I do pranic healing, then I write my affirmations. It does not work. Anything done for a long period of time is also not working. Anything done for a very short period of time is also not working. You need to find the middle path and the balance. The ideal time period for anyone to work on their spiritual expansion, metaphysical expansion, to improve their life, ideal time is 1 hour per day. 1 hour per day if you are in the middle of it. If you are neither too poor, neither too rich. If you're in the middle. If you're very, very poor and if you're going through a very scarcity consciousness, you need to work for 1.5 or maybe 2 hours also. That includes all your recordings and sessions and this and that and everything. That does not include scrolling on Instagram. No. Practice what you're doing 1.5, 2 hours. If you're in the middle path, 1 is enough. And if you're already achieved your dream and you want to sustain that lifestyle, 15-20 minutes, half an hour is enough. So low frequency वालों के लिए 1.5-2 घंटा, मीडियम फ्रीक्वेंसी वालों के लिए 1 घंटा, हाई फ्रीक्वेंसी वालों के लिए आधा घंटा. Follow this, you will be able to do a lot. Then what is low frequency वाला और low cost वाला काम हो सकता है? Medium frequency, watching a recording, applying it in your life and working on it because आप अभी उधर हो. High frequency will be doing that class live or attending the recording or watching the recording of the new year. आपको 24, 2025 वाला इसलिए करना है क्योंकि अभी आप 2026 वाला अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो. कोई बात नहीं, लेकिन यहां से शुरुआत तो करो. जब यहां से शुरुआत हो जाएगी तो शायद मे बी विद इन 4-5 months you'll reach at this level. But something has to be done. And if you feel कि आपको हीलिंग मिल ही नहीं पा रही है, आप अगर कुछ कर ही नहीं पा रहे तो डिस्टेंट हीलिंग ले लो. सिंपल. Give your photograph, give your name, give your date of birth, give the issue for what you want healing, pay only minimum 3,000 a month, that is 100 rupees a month, and then start your healing process, start your aura cleaning process. You will see the difference within 3 months. Any healing in angel therapy, Akashic therapy, Karmic therapy takes minimum 3 months, or if you want to calculate in 40-day cycles, it takes 3 40-day cycles. 40, 40, 40, 120, that's equal to 4 months. इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ 3 से 4 महीने में ही आहिस्ता आहिस्ता खिचड़ी पकेगी. अगर आपको कल का कल रिजल्ट चाहिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है.
There is nothing instant in angel therapy, karmic therapy, and akashic therapy unless and until the angel comes and sits on your head and gives you a miracle. तो बात अलग है. That's like winning a lottery again. कुछ भी करने के लिए you have to consistently build up. Now we are going to do the attunement for the financial success, and then maybe one more thing I'll explain, and then we are going to wind up. So drink some water. I'll take your questions later. Okay. Clear the aura because I was talking a lot. There are a lot of questions. I can see approximately 15 messages. So I will take that later. या पहले एक बार वो क्वेश्चंस ले लेता हूँ, उसके बाद ही अट्यूनमेंट करता हूँ, नहीं तो वो दिमाग में घूमते रहेगा. There are people who don't have clarity what they want to do. How do they attain clarity? Either by doing what I just told you in the last 1 hour, or then by receiving some kind of healing or coaching or whatever it is. So that question is answered. How much is your fees for the angel therapy healing course, sir? I've sent the website so many times. उसके ऊपर सारा पूरा अपडेट किया हुआ है. आप एक बार देख लेना वेबसाइट. ओके, उसके ऊपर सारा कुछ है. It has been updated. All right. Then next question. Rupees 3,000 for previous years recordings. Is this for angel trainees or for anyone? It is for everyone. Rupees 3,000 for previous years recordings. Okay, that is the minimum. It's for anyone who wants to take. जो मेरे साथ लास्ट ईयर थे उन्होंने तो ग्रुप सेशन किया है, उनके पास तो ऑलरेडी है, उनको वापस लेने की जरूरत नहीं है. I am unable to join the meeting due to the server issue. Can you please send the recorded video? The recordings will be sent only in the community. तभी आप recording देख सकते हो. Next question. Sir, 60,000 वाला क्या प्रोग्राम है? आप कभी भी अच्छा क्या है? ठीक है. Entire classes should be healing courses in English. Okay. This I'll answer. I have not understood the question. I'll answer this question. 60,000 का मेरे पास कोई प्रोग्राम नहीं है. Okay. मेरा तो खाली 30,000 है for all the 123 group sessions. So I don't know what is this about. Anyway, what is the link for the 50 training sessions for 2026? I've missed a lot and I'm catching up now. Link for the 50 training sessions of 2026. You are already a trainee. आपके पास लिंक क्यों नहीं होते मुझे पता नहीं. Every week मैं लिंक अपडेट करके भेजता हूँ. आई एम सेंडिंग इट टू यू अगेन. देखो, जो लोग 2-2 साल हैं, 1 साल से कर रहे हैं, वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है लाइफ में. सो व्हाट टू डू. ऑल राइट देन. ओके, दिस क्वेश्चन इज अगेन अ पर्सनल क्वेश्चन. आई एम नॉट टेकिंग इट. सर, देयर इज ऑडियो एंड विजुअल ब्रेक. ओके, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स. आई आस्क्ड everyone is able to see me and hear me. So if you have not been able to see or hear anything, then you can see the recording. Next question. सर, सेशन में ऑरा क्लियर करने के बाद क्या रात को सोने से पहले फिर करना है? वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है. I have given that in the video and I have explained it again and again and again that aura clearing must be done compulsorily at night before you go to sleep. Okay? ये मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया. इसका मतलब आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है. आप न तो ऑरा क्लीनिंग के वीडियो देख रहे हो, कोई भी वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हो. ठीक है. उसके बाद में ये क्या है? हीलिंग वाला कोर्स आई नीड. मेरे पास कोई हीलिंग वाला बाबा पर्सनल मत पूछो. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज दिस नाउ? I will wait and see if I can do anything. Why are you even writing this message? Whenever you decide, you write down. See, I just explained. I will wait and see. You will wait and see, and you will never take any decision. Why are you writing down that affirmation? Anyway, जिन लोगों ने भी जूम चैट्स पे क्वेश्चन टाइप किए थे, अगर उनको क्वेश्चन अभी भेजने हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए. मैं जूम चैट नहीं देखता हूं, तो आप अभी भेज देना ना. विल डू द अट्यूनमेंट. ओके, चलो, लेट्स क्लियर द ऑरा क्विकली. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. ये क्यों अभी ऑरा क्लीन किया? You people ask so many questions. Most of you are thinking there and sitting and judging and projecting energies, thinking about your life, my life, so many things. So it's better to clear the aura before I do the attunement for you and you do the attunement for yourself. Otherwise, nothing works.
एवरी नाउ एंड देन किसी को हक कर रहे हो, किसके साथ हाथ मिला रहे हो, बाहर से आए हो, ओला में से बाहर निकले हो, ट्रेन में से बाहर निकले हो, पहले अपना ऑरा क्लियर करना है. जितनी बार करोगे उतनी सेहत अच्छी रहेगी एंड यू विल refrain from falling sick. Your body will bless you. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Around 3 or 4 of you have asked me how to pay 3,000. वो पूरा वेबसाइट पे है, लेकिन अभी क्लास होने के बाद में पूछना, मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. वट एवर लो कॉस्ट प्रोग्राम के लिए आपको वो 3,000 भरना है, वेदर इट इज डिस्टेंट हीलिंग, वेदर इट इज GLS, whether it is recordings of 2024 or recordings of 2025, you can message me after class. Okay, so let's start. We'll start from here. Okay, start with this wonderful financial attunement. It's a free class, so मैं इसको टाइप करके कम्युनिटी में नहीं भेजने वाला हूं. आपको लिखना है तो बाद में रिकॉर्डिंग देख के आप वापस लिख लेना. So refrain me from asking, sir, please send the attunement, please send the attunement. You can write it down after listening to the recording. थोड़ी मेहनत आपको भी करनी होती है. ठीक है. Yes, I claim and declare with gratitude that my guardian angels love, light, harmony, truth, beauty, prosperity, and security flow through me freely and joyously, and I know that I am now being prospered and blessed beyond my fondest dreams. After every organ of the body, take a deep breath. I'll repeat it slowly only. I claim and declare, this attunement I'm doing for the first time. I claim and declare with gratitude that my guardian angels love, light, harmony, truth, beauty, prosperity, and security flow through me freely and joyously, and I know I am now being prospered and blessed beyond my fondest dreams. After you finish the attunement, let out a breath. Out breath पहले जाना चाहिए, ताकि जहां पर भी बॉडी के ऑर्गन में पनौती, एनर्जी, कुछ भी अटका हुआ है वो सारा निकल रहा है. इसलिए आउट ब्रेथ इंपॉर्टेंट है, बाद में ब्रीथ लेना है. थर्ड, I claim and declare with gratitude that my guardian angels love, light, harmony, truth, beauty, prosperity, and security flow through me freely and joyously, and I know I am now being prospered and blessed beyond my fondest dreams. Okay? Out breath. All right. Fourth, I claim and declare with gratitude that my guardian angels love, light, harmony, truth, beauty, prosperity, and security flow through me freely and joyously, and I know I am being now prospered and blessed beyond my fondest dreams. लिखने का काम रिकॉर्डिंग में से कर देना, अभी मेरे साथ कर लो, बेटर रहेगा. 5. I claim and declare with gratitude that my guardian angels love, light, harmony, truth, beauty, prosperity, and security flow through me freely and joyously, and I know I am now being prospered and blessed beyond my fondest dreams. Okay? Take 3 deep breaths now. Center of the eyebrow. I claim and declare with gratitude that my guardian angels love, light, harmony, truth, beauty, prosperity, and security flow through me freely and joyously, and I know I am now being prospered and blessed beyond my fondest dreams. One breath. गले पे. I claim and declare with gratitude that my guardian angels love, light, harmony, truth, beauty,
prosperity and security flow through me freely and joyously, and I know I am now being prospered and blessed beyond my fondest dreams. Again, one deep breath. On the stomach, दोनों हाथ घुमाने हैं. I claim and declare, ये ऐसे, ये जैसे मैं घुमा रहा हूं, दोनों हाथ मेरे पेट पे. ओके, ऐसे हाथ घुमाने. I claim and declare with gratitude that my guardian angels love, light, harmony, truth, beauty, prosperity, and security flow through me freely and joyously, and I know I am now being prospered and blessed beyond my fondest dreams. Deep breath. अभी बेली बटन अपनी नाभि, बेली बटन अपनी नाभि पे एक राइट या लेफ्ट हाथ की कोई भी एक उंगली रखनी है. आहिस्ता से अपना टी शर्ट या अपना टॉप ऊपर करना है. ध्यान देना कैमरा में किसी को दिखे नहीं. टी शर्ट आहिस्ता से ऊपर करना है. अपनी नाभि में ये उंगली टच करनी है. ठीक है, बेली बटन में टच करनी है. I claim and declare with gratitude that my guardian angels love, light, harmony, truth, beauty, prosperity, and security flow through me freely and joyously, and I know I am now being prospered and blessed beyond my fondest dreams. हाथ निकालो नाभि से. अभी दोनों हाथ अपनी जांघों के बीच में ऑन योर सेक्सुअल ऑर्गन्स. ओके, दोनों हाथ ऐसे कवर करना है जांघों के बीच में ऑन योर सेक्सुअल ऑर्गन्स. I claim and declare with gratitude that my guardian angels love, light, harmony, truth, beauty, prosperity, and security flow through me freely and joyously, and I know I am now being prospered and blessed beyond my fondest dreams. Take a deep breath. लास्ट एंड फाइनल, अपने दोनों घुटनों के ऊपर. ओके, दोनों घुटनों के ऊपर. अभी मान लो ये घुटना है, सपोज ऐसे हाथ घुमाना है. बिकॉज नीज आर दी ऑर्गन्स विच डू नॉट अलाउ यू टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. सो जब घुटनों की एनर्जी क्लियर करते हो, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी ऑफ बोथ द लेग्स, यू आर ग्राउंडेड मोर पावरफुली टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. सो दोनों घुटनों पे दोनों हाथ ऐसे घुमाने हैं, स्लो एंड स्टडी. I claim and declare with gratitude that my guardian angels love, light, harmony, truth, beauty, prosperity, and security flow through me freely and joyously, and I know I am being prospered and blessed beyond my fondest dreams. Take 3 deep breaths. Wow, 1.5 घंटा होने को आया. Very nice. 5 minutes are remaining. We'll wind up, so it will be a proper 1 hour 30-minute class today. Take 3 deep breaths now. और अभी वापस 4 बार ऑरा क्लियर करो. फिर अपने फोटो के पास अट्यूनमेंट करेंगे एंड देन आवर सेशन विल गेट ओवर. 4 बार वापस ऑरा क्लियर करो, क्योंकि बॉडी का सब निकाला तुमने. ठीक है, और तुम लोगों को देख रहे हो, मैं मेरे बॉडी का निकाल रहा हूं, तुम तुम्हारे बॉडी का निकाल रहे हो. सो बेटर टू क्लियर दी ऑरा वंस अगेन. 1 2 3 4 5 6 7. बॉडी बहुत हल्की लग रही मुझे. आपका तो मुझे पता नहीं. यू कैन एक्सपीरियंस योर ओन थिंग, बट आई एम फीलिंग रियली बेटर राइट नाउ, क्योंकि बाहर से आया था. एंड एक्चुअली आई एम गोइंग थ्रू एन इशू राइट नाउ, आई एंड माय वाइफ. वो अभी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करना, बट देयर वर सम सॉर्ट ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी अटैक ऑन आवर अकाउंट्स. इसलिए आई एम टेलिंग एवरीवन नॉट टू ट्रांसफर द मनी इन माय अकाउंट, एंड आई एम गिविंग देम सम अदर जीपे नंबर. तो वो पिछले 6 दिन से कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट और इधर उधर, इसलिए क्लियर दी ऑरा प्रॉपर्ली. हम लोग इतना हीलिंग का काम करते हैं, हमारे साथ भी ये सब हो जाता है. सो इट्स अ लाइफ लेसन. इट्स ओके, यू एक्सेप्ट इट एंड यू मूव इट. क्या करें बोलो.
कहां पर डोंबिवली, कहां पर थाने, कहां पर माटुंगा स्टेशन, कहां पर लोअर परेल। आदमी एक एक दिन में किधर किधर घूमेगा। बैंक में जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, साइबर सेल जाओ, ये करो वो करो। भगवान बचाए। मेरा ही कुछ वाइब्रेशन होगा जो हुआ होगा, बट इट्स ओके। रिलीज एवरीथिंग। दैट इज वाई जब भी किसी को पैसा भी ट्रांसफर करो, मुझे भी ना, पहले फोन करो, सर आई एम मेकिंग अ पेमेंट नाउ, देन आई टेल यू ओके ट्रांसफर 10 रुपीज फर्स्ट। 10 रुपया आया, मैंने कंफर्म किया, बाद में बाकी का करो। इट्स ऑलवेज बेटर लाइक दैट। बरं वाटलं, फीलिंग रियली नाइस, थैंक यू। हाँ, पूरे दिन का सब थकान गया। अभी अपने गुरु, अपने भगवान, अपने इष्ट, अपनी कुलदेवी कुलदेवता का फोटो जो भी सामने रखना है तुमको रखो, और उनके सामने देख के अट्यूनमेंट करते, देन आवर सेशन इज ओवर। सो वील हैव अ ब्यूटीफुल नाइट एंड ऑल ऑफ अस कैन स्लीप पीसफुली। दोज हु आर फ्रॉम अब्रॉड, दे कैन स्टार्ट देयर डे ब्यूटीफुली। तो अट्यूनमेंट कैसे करना है तुमको पता है। फोटो के सामने देखना है, अभी मैं तुम्हारे सामने नहीं देख रहा हूं, फोटो के सामने देखो। डीप ब्रेथ लेना है। व्हेन यू आर टेकिंग अ डीप ब्रेथ, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 5 या 7 या 10 बार, मिनिमम 3 मिनट्स, इतना तो करना ही करना है। 3 बार इसलिए करना है ताकि तुम्हारा त्रिकोण पूरा हो जाए। ठीक है। अभी वो फोटो के सामने देखकर हम लोग 5 बार ये अट्यूनमेंट रीड करेंगे, एंड देन इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस वी विल सी। एक मिनट पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि फिर अट्यूनमेंट के बाद में, सर आई वांट टू पे, हाउ डू आई पे। अभी तो मैंने बोला बाबा क्लास के बाद में पूछना, मैं बता दूंगा, पहले 10 रुपया भरना, बाद में देखा जाएगा। ठीक है। एनीथिंग एल्स? इफ आई टेक ऑल थ्री, डू आई गेट अ डिस्काउंट? नो। 3,000 रुपीज फॉर वन, अभी उसमें भी डिस्काउंट मत पूछो प्लीज। इंडियंस लव टू बार्गेन ना, इट्स अ गुड थिंग, नो डाउट यू आस्क द क्वेश्चन। लेकिन भाई बस है, अभी 3,000 रुपया तो मिनिमम चाहिए कि नहीं। आदमी 1.5 घंटा मेहनत कर रहा है, सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, 1 महीना तुम्हारी हीलिंग करने वाला है, 50-50 तुमको रिकॉर्डिंग दे रहा है, और तुम बोल रहे हो भी ये भी ले रहा हूँ वो भी ले रहा हूँ, उसमें भी डिस्काउंट दे रहा हूँ। वो तो ये बात हुई ना, भैया ½ किलो भिंडी देना, ½ किलो टिंडी देना, 2 किलो टमाटर देना, और कड़ी पत्ता मिर्ची 10 रुपए का फोकट में डाल दो प्लीज। वो काम मत करो। ऑल राइट, चलो, डू द अट्यूनमेंट इन फ्रंट ऑफ योर फोटोग्राफ एंड गुरु। आई क्लेम एंड डिक्लेयर विद ग्रेटिट्यूड दैट माई गार्डियन एंजल्स, हाँ मुझे वो फोटो पे भी देखना पड़ेगा, इधर भी तो मैं फोटो भी इधर ही रख देता हूँ। आई एम लुकिंग एट द फोटोग्राफ एंड आई एम रीडिंग द अट्यूनमेंट। आप लोग अपने फोटोग्राफ पे देखो। I claim and declare with gratitude that my guardian angels' love, light, harmony, truth, beauty, prosperity, and security flow through me freely and joyously, and I know I am now being prospered and blessed beyond my fondest dreams. I claim and declare with gratitude that my guardian angels' love, light, harmony, truth, beauty, prosperity, and security flow through me freely and joyously, and I know that I am now being prospered and blessed beyond my fondest dreams. I claim and declare with gratitude that my guardian angels' love, light, harmony, truth, beauty, prosperity, and security flow through me freely and joyously, and I know that I am now being prospered and blessed beyond my fondest dreams. I claim and declare with gratitude that my guardian angels' love, light, harmony, truth, beauty, prosperity, and security flow through me freely and joyously, and I know I am being now prospered and blessed beyond my fondest dreams. One last time, I claim and declare with gratitude that my guardian angels' love, light, harmony, truth, beauty, prosperity, and security flow through me freely and joyously, and I know I am now being prospered and blessed beyond my fondest dreams. Today it is Friday night over here. Barabar na? Haan. Tomorrow is Saturday morning. It is 31st, last day of the month, 31st of January.
So I am going to do one more session in the morning, early morning, 8 o'clock, 8 to 8:15, 8:20. I'll do some GLS or some EFT tapping or whatever comes to me so that we can end the month on a beautiful note. So if you would like to attend tomorrow's class, which is also free, you can join on the same link. Avoid asking me for the link again. The link is there in your community, in your group. Same link tomorrow morning 8 o'clock. 8 to 8:15, 8:20 या मैक्सिमम हुआ तो 8:30. ज्वाइन कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो भी अच्छी बात है. Saturday 31st January we are going to end the month with all the number one पोर्टल का एनर्जी जो भी गैदर हुआ था which was not working उसको छोड़ देंगे और जो वर्किंग है उसको ले लेंगे, बिकॉज एक दो दिन में पूर्णिमा आ रही है तो पूर्णिमा के सेशन के लिए रिलीज करना जरूरी है. तो कल थोड़ा रिलीज भी कर लेंगे और थोड़ा सा काम भी कर लेंगे. पूर्णिमा कब है जरा देखना एक मिनट, अभी मेरा कैलेंडर पीछे लगा हुआ है. जस्ट अ मोमेंट. संडे को है क्या पूर्णिमा? जरा एक जन बताना. काल निर्णय देख के इधर उधर मत देखना, खाली काल निर्णय बताना बिकॉज आई फॉलो ओनली दैट. काल निर्णय है तो देख लो. संडे को है? ओके संडे को ही है, ठीक है. तो संडे को पूर्णिमा वाला सेशन होगा विच इज ऑब्वियसली नॉट फ्री, दैट इज ओनली फॉर पेड पार्टिसिपेंट्स. पूर्णिमा हीलिंग तो शायद वो कल रात को हो सकता है, तो कल रात को ताकि पीपल कैन प्रैक्टिस ऑन संडे. वो मैं डिसाइड करता हूँ. चलो 1st February इज पूर्णिमा तो वो भी. बट वी मी सॉरी बट नहीं, कट क्लियर डिलीट. वी मीटिंग टुमारो मॉर्निंग. एंड वंस अगेन इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन एनी पेड प्रोग्राम, please connect with me directly before you transfer any money into any account. Talk to me, transfer 10 rupees, let me confirm it, and then do the other transfers. With that, God bless you. Angels bless you. See you tomorrow morning, 8 o'clock. Thank you.